Hi students, welcome back to our online class. I am back with your new today video. In this video we would like to continue about the second part of the chapter 9, the earth our habitat students. So we won't waste our time because time is very much precious to ourselves students. So in this topic we would like to start from the location. We will like to start about the location and shape of earth, means how we could be get the location and shape of earth. So let's get started. Our subject social science, chapter number 9, the earth our habitat students. So the topic is location and shape of earth students. So we see the sun and the moon shaking, right? We should see the sun and moon shaking. How good it looks. It looks beautiful, right students? Our earth is also such a space only. It is spherical. It is like oval spherical shape student. It is flat at both the poles. It is totally flat. एंड सम एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स है वो सब जो मून में गए थे वो ये उन्होंने अर्थ का फोटोग्राफ लिया है मून में वहाँ पे जाके स्टूडेंट. सो दे हैव टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ्स. सो देन वी कैन सी दैट मून earth looks like the giant space, means we can see the earth and moon like a giant, मतलब बहुत बड़ा है students. okay, we are living in a small village of our city, right? हम लोग एक small छोटे से village एक city में रहते हैं students. So the part of earth which we able to see is a very small part of earth. मतलब वो बहुत छोटा सा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं स्टूडेंट्स. Thus it cannot be seen by us that the earth is spherical. So we can't say that the earth is spherical. So the spherical spelling is S-P-H-E-R-I-C-A-L students. That is pronunciation as a spherical students. Okay. So now you can say, have you ever seen broken earth pot? आपने कोई broken earth pot देखा है students? Because if you will take it in your hand, their small piece, it would be like a round shape. वो एक round सा shape है. आप जैसे ball का shape होता है, like that way similar students. So if you wanted to have a photographs of moon or earth of any space, there is no doubt about the earth space. तो इसमें आप बाई चांस मून और अर्थ और कोई भी स्पेस के प्लैनेट्स के फोटोग्राफ देखोगे तो इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट देयर शेप स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी जो शेप है वो एकदम एग्जैक्टली स्पेरिकल शेप के है स्टूडेंट्स. सो वी ऑल नो दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अर्थ इज नॉट राउंड. वो राउंड नहीं है. अर्थ इज नॉट एट ऑल राउंड लाइक अ बॉल की तरह राउंड अर्थ बिल्कुल नहीं है. इट लाइक्स अ ऑरेंज, एक ऑरेंज की तरह है, राइट? ऑरेंज हम लोग फ्रूट है ना, उसके शेप में है हमारा अर्थ स्टूडेंट्स. द अर्थ पोर्स आर स्लाइटली फ्लैट, एकदम स्लाइटली फ्लैट है एंड वो इक्वेटर की तरह स्ट्रेट एकदम होता है स्टूडेंट्स. और जो सेंटर है अर्थ का वो बहुत बड़ा लार्ज है, एकदम लार्ज, क्योंकि उसके जो अर्थ का और वॉल्यूम का वेट है, जो अर्थ के वेट और वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर टाइप का है, मतलब डिविजिबल. इट इज़ यूज लाइक अ सर्कुलर डिवाइस. एकदम सर्कुलर जैसा डिवाइस नहीं होता है वैसे टाइप का लगता है स्टूडेंट्स. And we all can see in our map, our world map, that it is already drawn on our world map students. So the continents, oceans and important lines are drawn in our map, right? हमारा जो globe है आप उसमें easily देख सकते हो students, right? So the globe is a small replica of the earth. मतलब जो जिस तरह से अर्थ है उसका एकदम स्मॉल पार्ट है ग्लोब, मतलब ग्लोब जैसा है वैसा ही सेम टू सेम अर्थ है स्टूडेंट्स. एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल. इट इज अ ब्लूइश कलर अर्थ, राइट? So we can say the earth, on the circle of the earth there would be north side and the south side also. Means north would be the up side and south would be in the downward side. And with the help of the globe it can be said that earth is tidal towards one side. मतलब ये बोल सकते हैं मैप के थ्रू कि जो अर्थ है वो एक ही साइड में सराउंडेड है स्टूडेंट्स. ओके, So this were all about the
location. Right, students? Now we will talk about some different parts, and that we can say a star. So have you heard about the pole star, students? P-O-L-E, pole star. If you haven't heard about that, so right now I will explain you that one. Okay, students? So the pole star, there is a star in the sky which always appears in the same direction at the same place. एक ऐसा स्टार है स्टूडेंट्स जो हमेशा उसी स्पेस में और उसी टाइम में वो स्टार देखा जाता है. दैट इज दे आर हेयर टू बी कॉल्ड विच स्टार. मतलब वो स्टार कौन सा स्टार है, आपको पता है क्या स्टूडेंट्स कि वो कौन सा स्टार है? सो दैट स्टार इज द पोलर स्टार. पोलर स्टार can be usually and easily detected with the help of the constellation. जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, constellation, set of stars और single stars, उसके बेसिस में ये पोलर स्टार भी अहेड मिला जाता है स्टूडेंट्स. So now you will see a bright star will be moving in the direction of the famous line, and that would be connected with two stars. दो stars के साथ वो connected होता है students. एक सबसे पहले कौन सा होता है? सप्तऋषि. क्या है? सप्तऋषि. That is the polar star. In Hindi we can say हम सप्तऋषि. सप्तऋषि is a pole star students. Okay. पीपल हु ट्रेवल बाय सी, जो सी के थ्रू ट्रेवल करते हैं वो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही जाते हैं, क्योंकि वो जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पाया जाता है, बिकॉज इट इज विजिबल ओनली इन द नॉर्थ डायरेक्शन स्टूडेंट्स. एंड ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, मतलब वो एक ही जगह पे रहता है, राइट, दैट इज नॉट मूवेबल एंड दैट इज इन अ सर्कुलर शेप ऑन द अर्थ. सो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी सीन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसलिए वो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं देखा जाता. क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइड में ही देखा जाता है, बिकॉज दैट विल बी प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टूडेंट्स. सो जो एक ही प्लेस में और एक ही टाइम में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. और एक नाम है इसका, वो है पोलर स्टार स्टूडेंट्स. ओके. Now we will discuss about the latitude and longitude. You all have heard it in your class standard 5 students. So latitude, longitude, map, these all have been completed in your standard 5. So it is more easier to learn it in a detailed manner in this class standard 6. So students, latitude and longitude. There are vertical and horizontal imaginary lines on the Earth's surface. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के सरफेस में, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स द एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन नो, एंड दीज लाइन्स आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये जो अर्थ है उसके सरफेस में ये पूरी लाइन्स दिखाया जाता है स्टूडेंट, एंड दीज लाइन्स आर ऑल्सो सीन ऑन द मैप स्टूडेंट्स. ओके. सो नाउ दिस वन इज द लॉन्गिट्यूड. Now we will see the latitude part. The horizontally imaginary lines drawn on the earth surface, जो अर्थ की जो सरफेस होता है उसमें ड्रॉन किया गया जो लाइंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स. LATITUDE. yes, latitudes. If any point on the surface of the earth is connected by a straight line into the center of the earth, जो सेंटर में जो लाइन से वो लाइन कनेक्टेड होता है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूड. देन द लाइन बिकम लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट. वो जो लाइन होता है वो लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट्स. एंड एज फार द एंगल, एंगल से जितना दूर होगा वो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर. इक्वेटर से वो जितना दूर होगा वो ज़्यादा सही से उसको लैटिट्यूड माना जाता है स्टूडेंट्स. द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181. सो हमारे पूरे मैप में, वर्ल्ड मैप मतलब अर्थ के मैप में आप बोल सकते हो टोटल 181 लैटिट्यूड्स है स्टूडेंट्स. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द latitudinal line. That is a latitudinal line. So the east and west means this one is east and this one is west.
सो ईस्ट एंड वेस्ट व्हेन बी कनेक्टेड, एक साथ होते हैं अर्थ में, तो वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिस्टेंस में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए उसको लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। मतलब ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, इनकी जो लाइन होती है वो परफेक्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस स्टूडेंट्स। ओके, so I have already told you longitudes, so one more time we will see. The vertical imaginary line drawn on the surface of the earth are called longitude students. Okay, now we will see the inner circle. Inner circle मतलब अंदर के सर्कल की बात हम लोग कर रहे हैं। The north and south straight line connected the imaginary surface of the original linear of the Earth's axis at the same angular distance along the Earth's surface is called linear circle. मतलब जो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो एक इमेजिनरी सरफेस लाइन कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, जो पूरे के पूरे अर्थ के एक्सिस में दिया गया है, अंदर ही भाग में, इनर मीन्स अंदर ही भाग में, उसको बोलते हैं इनर सर्कल स्टूडेंट्स। ओके, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट वन बाय पार्ट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी वी विल डिस्कस द मेन लैटिट्यूड्स पार्ट। नोटिस दैट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन drawn on the center of the earth surface. आप सोचो कि एक अर्थ सरफेस में हॉरिजेंटल लाइन बना हुआ है जो दो भाग में डिवाइडेड into two parts, that is in the northern hemisphere and the southern hemisphere. So the north side would be the north latitude and the south side would be the south latitude, right? And the southern hemisphere or latitude would be some degree amount there would be there. So that line would be drawn in the Tropic of Cancer. आपको पता है ना Tropic of Cancer क्या है? The imaginary line have been straighted on goes to the world map, that is the Tropic of Cancer. So there are two types of, first one is Tropic of Cancer, right? And the second one is Tropic of Capricorn. That's right students. Good. I know you all know it very well. So students, the speed of the sun between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in the south of equator is called solstice. जो स्पीड है सन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थ्रू, वो पार्ट को क्या बोलते हैं? सोलिस्टियर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस सोलिस्टियर्स आर हैविंग अ सर्कल्स होते हैं जिसको सोलिस्टिसेस भी बोलते हैं। ये 6 मंथ्स में चेंज होते रहते हैं और सन के इधर गिधर चेंज होते रहते हैं एंड टाइटल्ड द अर्थ के इधर गिधर आ जाते हैं, अर्थ के बिहाइंड में डेफिनेटली इजिली आ जाते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स वाई द सन फॉल्स थ्रू द स्ट्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. That's why students, the sun rays means the rays of suns have been directly towards gone to the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn students. Okay, so this way we're talking about the linear circle of earth. Now this one is a next topic and that is a very useful topic and you have all heard it about. So this topic is all about the GPS. So have you know about the GPS? Right students, अभी के टाइम में GPS is all about the map, right students? But in this geography lesson, GPS is something different also students. So GPS is global positioning system. So what is it GPS? Global positioning system. So let's see the global positioning system. So with the help of global positioning system, we can know about the latitude and longitudinal location. GPS, we all use this GPS, right? While we have to go from one place to another place without knowing the directions. So with the help of the GPS, we can go through it very easily. Then the latitudinal and longitudinal location place can be find out with the help of mobiles and with the help of the internet students. मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह easily जा सकते हैं, right students? With the help of the GPS. So what is the full form of GPS? That is Global Positioning System. That's right students. Now we will see the major longitude students.
कौन से मेजर लॉन्गिट्यूड्स है? तो पहला जो मेजर लॉन्गिट्यूड है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज GMT टाइम, जिसके थ्रू हमारे टाइम लिमिट चलता है, स्टैंडर्ड टाइम लिमिट एंड इंटरनेशनल टाइम लिमिट. You know it very well. So we will discuss that one. The 0-degree longitude which passes through Greenwich, city of England, is called Greenwich. The Greenwich line divides it into two equal half. मतलब जो लाइन ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड से पास किया जाता है उसको ग्रीनविच लाइन बोला जाता है, और ये 2 भाग में डिवाइडेड है. इज द ईस्टर्न वन एंड द वेस्टर्न पार्ट. Eastern part and western part, students. Then the longitude of Greenwich is 180 degree and the eastern part would be 180 degree east and the western part would be 180 degree west, students. That's why that is called the eastern longitude and the western longitudes. Okay, so this were the Greenwich. Got it, students? Greenwich mean time. This is the line having gone through the Greenwich at England, city of England. Now we will see the international date line. Okay, students, internationally date line. So 180 degree longitude is called international date line. जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन में हम लोग देखते हैं. एंड इट हैज जस्ट वन लॉन्गिट्यूड, एक ही लॉन्गिट्यूड उसमें होता है, जिसमें डेट और टाइम चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं थ्रू द पासेज ऑफ पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन आप लोगों ने सुना ही है, उसके थ्रू डेट एंड टाइम इसके चेंज होते रहते हैं, स्टूडेंट्स. एंड इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट 180 डिग्री. वो हमेशा 180 डिग्री में नहीं होता, बिकॉज दैट इज इन अ जिग-जैग मैनर. वो एक जिग-जैग मैनर में होता है, स्टूडेंट्स. ओके, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट इट इज नॉट ड्रॉन स्ट्रेट. क्योंकि उसका रीजन क्या है? जिग-जैग है, राइट? कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर. सो दैट इज अ जिग-जैग मैनर. सो व्हाई? द रीजन इज दैट द लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट, स्टूडेंट. एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी वजह से ऐसा है. It will cross some islands also and some countries also. ये कोई island से भी जाते हैं और कोई countries से भी जाते हैं. Because of which two dates, the same island having a different date and time, students. And to which places while going to other side, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उसकी जो टाइम लिमिट है, उसके जो डेट है वो भी चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग अभी इंडिया में, राइट स्टूडेंट्स? If we wanted to go America, so their date and their time would be different right now. And I, of behalf of knowledge, the America is going too far. Means we are the first one to access the new date. Afterwards, they will access the new date. Okay, students? And to prevent this confusion, sometimes this type of confusion would be held in our mind, students. Right, obviously. So what happened to avoid my confusion? If you wanted to avoid your confusion, if you are going to some other country, so the line is drawn through the sea, not the land. ये जो line है वो sea या land के थ्रू नहीं है. ये जो भी line है वो sea के थ्रू ही बना हुआ है, land के थ्रू नहीं बना हुआ है, students. Okay, students? So students, in this my video is now completed. This one the part 2 of this chapter 9, social science. So students, you have liked this video, so just like, share and subscribe, students. So I will see you in the next video. Till there, wait for the part 3 of this same chapter. So bye and have a nice day, students.